Okay, normalization is the process of organizing the data in database. Okay, it is used to reduce the redundancy from the relational set of relational. It is also used to eliminate the uh, insertion, updation, deletion anomalies. Okay, now who will tell me what is anomalies? Hmm? What is anomalies, students? Normalization is used to remove the anomalies. Insert, update and delete anomalies. Remove करने के लिए we are use the normalization. Now, what is बताएगा मुझे? And problems anomalies में Yes. चल बताओ. What is anomalies? Students, we are problems revising. Yes. हाँ बोलो मुझे आवाज नहीं आ रही है. Yes. Again repeat. Yes. कोई किसी ने आंसर दिया? Okay. Problems. name. Yes, problems. Okay, but which problem? Insertion problems, update problems, and delete problems. Okay, normalization divide the larger table into the smaller tables and links them using the relationships. Okay, the normal form is used to reduce the redundancy. Now we know all these things. Okay, types of normalization: 1NF, 2NF, 3NF, and BCNF. Okay, what is anomalies? The anomalies मतलब क्या? One type of conditions, okay, that conditions due to that condition we cannot insert or we cannot delete or we cannot update the data. Okay, you can say the problems. Also one type of problems called the anomalies. The update anomalies, what is the meaning of update anomalies? If the data items are scattered, okay, and are not linked to each other properly, then it could be lead to a strange situation. For example, when we try to update one data item, okay, having its copies scattered over the several places, the few instances get updated properly while a few others are left with old values. Okay, for example, I gave you the example. There is a two tables. Okay, SYT table is there and event table is there. So, for example, one student है, okay, उसका record in SYT table में भी है, event table में भी है. If we are changing the data of that student in SYT table, then automatically the that student's data also change in the event table. Okay, agar if it is not possible, then we can say that there is an update anomalies. Okay, so these types of problems called the update anomalies. Deletion anomalies, we try to delete a record, but part of it was left undeleted because of unawareness. The data is also saved somewhere else. Okay, it's called the delete anomalies. Insert anomalies, we try to insert data in record that does not exist at all. Okay, all these problems, okay, to solve all these problems we are using the normalizations. Okay, normalization is a method to remove all these anomalies and bring the database to a consistent state. Okay, there are four types of normalization. The first is first normal form. Okay, the first is first normal form. The first normal form is defined in the definition of relation itself, the table. This will define that all the attributes in the relation must have atomic domains. Okay, मतलब जो values है, the values should be unique. Okay, the values in atomic domains are in indivisible units. Okay, see, one table is there, force. Sorry, one table is there. In that table, there are two columns, course and content. Okay, course and content. So programming, the entry of course is programming एक value डाला है for the course attribute के लिए, and content में we have entered two values, Java and C++. So it is not valid. Okay, it is not valid. Second entry is web. Okay, and the values of content attribute to HTML, PHP, ASP. So it is not valid. So we can say that this table is not in the first normal form. So according to first normal form, the values जो है, okay, values of attributes must have atomic domains. Okay, single values हमको एक रो में एक ही डेटा होना चाहिए. For example, programming, now Java, programming again C++, because programming को दो वैल्यू असाइन किया हुआ है. So
We have to enter the data like that. Web HTML, web PHP, web ASP. मतलब each attribute must contain only single value. हर एक attribute को कितना value है? Single value है. ठीक है. Course is attribute, content is attribute. तो हर एक को single value है. ठीक है. यहाँ पे single value नहीं था. तो you have to check. First of all, you have to check कि आपके table में ऐसा कोई एंट्री है कि नहीं. तो if the entries are like this, okay, data are like this, so you have to remove, okay, that type of entries, and then you have to rearrange the table like this. Okay, so this is the first normal form. In the first normal form, you have to check every attribute must contain only single value. That is the first normal form. What is the second normal form? Who will tell what is the second normal form? कौन बताएगा मुझे? याद है किसी को? What is second normal form? इसको याद है, जितना भी याद है थोड़ा बहुत. One answer, sorry. One answer is there. Should be in first normal form. Yes, it should be in first normal form, and the second normal form में एक तो कंपलसरी है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए. Yes, Arun, good. Non-prime attributes should be fully functionally independent on the prime attribute. Yes, very good. Okay, तो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, okay, that dependent on the prime attributes. Okay, so what is prime attribute? The attribute which is the, yes, one answer is there. Ishad, normal form used in database. Normal form used in database. Yes, ठीक है Ishad. Okay. Second normal form में first condition है कि the table must be in first normal form. Okay, first normal form में होना चाहिए. And what is the second condition? Okay, every non-prime attribute should be fully functionally dependent on prime attribute. Yes, partially dependency which not allowed. Yes, Kojino, very good. Okay, partially dependency which not allowed. Very good. So what is prime attribute and what is non-prime attribute? So a attribute which is part of the candidate key is known as prime attribute. An attribute which is not part of prime key, it is said to be non-prime attribute. So what is the condition? Every non-prime attribute should be fully functionally dependent on prime key attribute. Okay, for example, in our table, there are 4 columns: student ID, project ID, student name, and project name. Okay, student ID, project ID, student name, and project name. तो हम लोग student ID को प्राइमरी की बनाएंगे. ओके, देन प्रोजेक्ट नेम को जो है हम स्टूडेंट आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड प्रोजेक्ट नेम को वी कैन आल्सो कनेक्ट विद द प्रोजेक्ट आईडी. तो ऐसे पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब एक ही टेबल में दो प्राइमरी की हम है अवेलेबल है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे. ओके, सो द टेबल विल बी डिवाइडेड. ये पार्शियली डिपेंडेंट हो गया. ठीक है, दिस इज पार्शियल डिपेंडेंट हो गया. Yes, or all non-prime attributes should contain partial dependency. नहीं होना चाहिए. Okay, which is second normal form में partial dependency नहीं होना चाहिए. Okay, partially dependency नहीं होना चाहिए. यहाँ पे project name जो है that is depend on project ID पे भी हो सकता है, and हम लोग project name को student ID पे भी depend कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, उसको remove करेंगे. Okay, and we will make the 2 tables, एक student table and project table. Student table में एक student ID होगा, project table में प्रोजेक्ट आईडी होगा. यस, इंडिपेंडेंसी लिखा है आपने. ओके, मैंने डिपेंडेंसी लिखा. इंडिपेंडेंसी, यस, इंडिपेंडेंसी. ओके, यस यस अरुण, नाउ इट इज करेक्ट. मैंने डिपेंडेंसी पढ़ा. ओके, इंडिपेंडेंसी. ओके, तो स्टूडेंट what we are doing here, we will divide the student project table into 2 tables. Okay, now first in the first table there are student ID, student name, and project ID, and the second is project table, उसमें project ID and project name. Now student name हो that is dependent on student ID. Okay, and project ID that is a foreign key. project ID क्या बन जाएगा आपका, foreign key, and that project ID is primary key in their own table. Okay, तो project table में project ID जो है that is a primary key. Yes, depends on primary key. Irshad. Okay, so this is आपका क्या हो गया, second normal form. We broke the relation into 2 as depicted in the above picture, so there exists no partial dependency. अब इसमें partial dependency
नहीं है. ओके, तो दिस इज द सेकंड नॉर्मल फॉर्म. तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट रूल क्या है, इट इज इन द टेबल मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एंड द सेकंड के जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है दैट मस्ट डिपेंड ऑन द प्राइम एट्रीब्यूट. ओके, बट एक ही सिंगल प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड होना चाहिए. तो इसमें क्या था, दो प्राइम एट्रीब्यूट्स था. ठीक है, स्टूडेंट आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी. ओके, तो हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट आईडी. प्रोजेक्ट आईडी को हमने क्या बना दिया, फॉरेन की बना दिया. नाउ प्रोजेक्ट आईडी जो उसके खुद के टेबल में क्या है, प्राइमरी की है. ओके, ठीक है. नाउ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म. ओके, ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. विच डिपेंडेंसी, ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. द थर्ड, द एंटिटी शुड बी कंसीडर ऑलरेडी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म. मतलब फर्स्ट रूल तो वही है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए टेबल. एंड नो कॉलम एंट्री शुड बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर entry other than the key for the table. If such entity exists, move it outside into the table. Okay, see, student id, student name, city, and zip. We find that in above table student id is key. Okay, and only prime attribute. We find that city can be identified. Okay, we find that जो city हम identify कर सकते हैं by student id as well as zip id पे से भी हम लोग city को identify कर सकते हैं. Okay, neither zip is the super key nor the city is prime attribute. तो ये क्या हो गया, transistor dependency हो गया. Okay, तो what is the meaning of transistor dependency? A B पे depend है, B C पे dependent है, and A is dependent on C. तो जो A C पे dependent है वो transistor dependency हो गया. ओके, तो उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है. तो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी रिमूव करना है इन दी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में. ओके, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, जो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी है दैट वी हैव टू रिमूव. सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या था, पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है, ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. ओके, ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए. ओके, मतलब स्टूडेंट आईडी जिप कोड पे डिपेंड है, जिप कोड सिटी पे है, तो स्टूडेंट आईडी सिटी से डिपेंडेंट है. तो ये जो दैट टाइप ऑफ ये जो है ना, ये हमको क्या करना है, रिमूव करना है. ओके, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, जिप कोड. नाउ जिप कोड इज डिपेंडेंट ऑन द सिटी. तो हमने क्या किया, जो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी था उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. क्लियर? ओके, दैट इज अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज होना चाहिए. सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो पार्शियल डिपेंडेंसी है दैट शुड बी रिमूव, एंड थर्ड में क्या होना चाहिए, जो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी है दैट शुड बी रिमूव. ओके, and BCNF is a form. Okay, the third NF and all tables in database should be only one primary key. BCNF मतलब क्या, कि थर्ड NF एंड जितने भी टेबल्स है डेटाबेस में उसमें कितना, एक ही प्राइमरी की होना चाहिए. और अगर चांसेस है कि एक से ज्यादा प्राइमरी की बन सकता है तो उसको हमको क्या करना है, टेबल को डिवाइड कर देना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, प्राइमरी की तो एक टेबल में एक ही होगा, दैट वी नो कि हम लोग एक ही की को प्राइमरी की बनाएंगे. बट क्या करना है कि अगर देयर आर पॉसिबिलिटी के मोर देन वन प्राइमरी की बन सकता है कोई चीज, तो हमको क्या करना है, टेबल को अगेन डिवाइड कर देना है. दैट इज कॉल्ड BCNF. दैट इज कॉल्ड BCNF. ओके, तो दिस इज अ नॉर्मलाइजेशन. ओके, हमने इसका एग्जांपल्स भी किया हुआ है, प्लीज उसको ट्राई करो एग्जांपल्स. ठीक है, विद साइड्स बेस हमने एग्जांपल ऑलरेडी किया हुआ था लेक्चर्स में. ठीक है, my next topic is constant incident commands. Okay, aggregate functions. One more lecture we require for revision, then we will continue with our unit 4 के साथ continue करेंगे. ठीक है, yes, left of each functional dependency should be candidate key or super key. Yes, Arun, क्या आपने, I cannot understand, left of each functional dependency. Yes, Arun, explain करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. अरुण, ये अरुण बताओ मुझे, क्या क्या आप पूछना चाह रहे हो. ओके ओके ओके, कोई बात नहीं अरुण, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो. ओके, aggregate functions. Okay, which are the aggregate function? Count, average, and sum functions are the aggregate functions. Okay,
we know the count is used, easy उसमें कुछ explain करना जैसा है नहीं. What is the use of count function? Returns the number of rows that matches the specified criteria. Average function returns the average value of numeric columns, and the sum function returns the total sum of the columns. You know, okay? And minimum and maximum. So average, count, sum, minimum, and maximum. All are the aggregate functions. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं. ओके, ऑल कमांड्स जो है उसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. दैट यू नो वी ऑलरेडी done and doing in the practical sessions. Okay, now in the unit 3 joins. Okay, joins हम लोग देख लेते हैं. Wait. Yes, relational algebra भी बाकी है. Yes, 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 yes. ओके, एक्चुअली वो जो रिलेशनल अलजेब्रा टॉपिक है ना, दैट इज टॉपिक इज इन माय लैपटॉप. आई हैव, मैंने शेयर नहीं किया है क्या आपको? रिलेशनल अलजेब्रा इज ऑसम. ठीक है, आई विल शेयर विथ यू. ओके, किया है मैंने शेयर. हाँ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है. एक मिनट. नहीं, आई थिंक मैंने शेयर नहीं किया है ना. ओके, चलो आई विल चेक. ओके, अगर नहीं तो मैं अगेन सेंड कर दूंगी, बिकॉज दैट टॉपिक इज ना मेरे लैपटॉप में से मैंने लेक्चर लिया था तो उसमें है. आई विल शेयर विथ यू. ओके, अगर नहीं किया तो आई विल शेयर विथ यू. आई विल चेक एंड अगेन शेयर. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो, joins. Okay, SQL join is used to fetch data from two or more tables. Which is join to appear as a single set of data. Okay, SQL join is used to fetch data. Okay, what is the use of join? Join is used to fetch the data from two or more tables. Okay, which is joined to appear as a single set of data. If you want to retrieve the data from two or more tables, then you can use the join. Okay, so there are types of join: inner join, outer join, left join, right join. Cross join is also there. Okay, cross join or Cartesian product. Okay, so cross join क्या करेगा? This type of join returns the Cartesian product of rows from tables in join. Okay, it will return a table which consists of records which combines each row from the first table with each row of the second table. Okay, कोई condition वगैरह नहीं, just हम लोग क्या करेंगे? If we are doing the Cartesian join ना, तो क्या होगा? दोनों टेबल्स में जितने भी रोज है उसका कॉम्बिनेशन करके हमको जो records है, records will be returned. Okay, कोई condition नहीं दे रही. The cross join, we have not defined any conditions. ठीक है, हम लोग कोई condition define नहीं कर रहे in the cross join में. Inner join, outer joins में we have to specify some conditions. Okay, but इसमें हम लोग conditions specify नहीं करेंगे. Just क्या करेगा? Combine करके देगा. क्या combine करेगा? Each row from the first table with each row of the second table. Okay, जितने भी rows है first table को उसको combine करेगा with the second row के साथ and the records will be returns. Okay, so that is a cross join. Okay, तो उसका what is the syntax? Select star from table. अगर आपको particular columns चाहिए तो you write the name of the columns from one table name. Class is a table name. Cross join second table name. Okay, so this is a syntax we have already done. तो हम लोग उसका अगेन practical नहीं करेंगे. Just we revise the syntax. Okay. The second is inner join or equi join. Okay, what is the inner join? कौन बताएगा मुझे? What is the inner join or equi join? Who will tell? Yes, student, चलो fast. Next lecture से मुझे start करना unit 4 जो continue छोड़ा था हमने वहाँ से we start the unit 4. Okay, yes, चलो बताओ what is inner join? What is inner join?
what is inner join, students? Yes, one answer is there. Print the matching value from both the tables. Print the matching value from the both the table. Okay. Inner join. Okay. Yes. और कोई try करेगा? Yes. Okay. Inner join or equi join. This is a simple join. This is a simple join in which the result is based on match data. Okay. Yes, as per the equality condition specified in the SQL query. जो हम लोग condition specify करेंगे, based on that condition the data will be written. Okay, the condition we have to specify the condition. Okay. What is the syntax? To select column name from table 1, inner join table 2, where table name dot column name equals to table name dot to column name. ओके ठीक है, तो दोनों कॉलम में दोनों टेबल में जो कॉलम स्पेसिफाई किया है उस सेम होना चाहिए, देन द रिकॉर्ड्स विल बी रिटन. ओके, फॉर एग्जांपल आईडी नेम इज देयर इन वन फ्रॉम द वन टेबल, सेकंड टेबल में भी आईडी एंड एड्रेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस्ड ऑन आईडी पे जो कॉमन रिकॉर्ड्स होगा दैट विल बी डिस्प्लेड. ओके, तो व्हाट इज द कंडीशन हियर? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास. Okay, this is the first table name. Inner join, this is the second table name, where class id equals to class info id. तो class के टेबल में से id equals to class info टेबल में से id. Okay, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. Okay, when we want to return the retrieve the data from the tables, multiple tables, तो दोनों tables में कुछ common होना चाहिए ना, based on common data. Okay, तो based on common data जो आपका आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा. अगर कॉमन है नहीं तो कैसे रिटर्न करेगा? ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो आपको लगेगा ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये क्या है? ठीक है, तो दोनों में कुछ, दोनों टेबल में कुछ कंबाइन है, कॉमन है, तो ही उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप दिखा सकते हैं या तो डेटा हम लोग रिट्राई करवा सकते हैं. अगर दोनों टेबल में कुछ कनेक्शन है तो इफ बोथ द टेबल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो फिर उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो कोई एक कॉलम या तो कोई एक एट्रीब्यूट मस्ट बी कॉमन. ओके, अगर कॉमन है तो वो रिटर्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा. Natural join. Natural join is a type of inner join which is based on column having same name and same data type present in both the tables to be joined. Okay, ऊपर भी वही था. ओके, ऊपर भी वही था, बट डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? कि नेचुरल जॉइन इज अ टाइप ऑफ इनर जॉइन का ही टाइप है विच इज बेस्ड ऑन कॉलम हैविंग सेम नेम. कॉलम का नेम भी सेम होना चाहिए, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए. ऊपर क्या था, कॉलम का नेम चेंज होगा तो चलेगा, डेटा टाइप चेंज होगा तो चलेगा, बट नाउ इन द इनर जॉइन में क्या होना चाहिए, कॉलम का नेम एंड उसका डेटा टाइप दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ओके, नेचुरल जॉइन रिटर्न तो वही करेगा, दोनों टेबल में कॉमन डेटा ही रिटर्न करेगा, बट दोनों कॉलम जो कॉमन है वो कॉलम दोनों टेबल का कॉमन कॉलम जो है उसको सेम नेम प्लस सेम डेटा टाइप शुड बी देयर. ओके, इन बोथ द टेबल्स टू बी जॉइन, इसको जॉइन करना है, so that is a natural join. So natural join is a type of inner join which is based on column having the same name and same data type. Okay, this is the main column having the same name and same data type present in both the tables to be joined, that is a natural join. Okay, so syntax, just you have to write natural join between the two tables. Okay, select star from class natural join class info. Okay, outer join, the outer join is based on the match and unmatched data. inner join में क्या था, only common data, matched data जो था वो return हो रहा था. now the outer join में matched data भी return होगा and unmatched data also return. Okay, तो outer join का 3 types divide किया है, left outer join, right outer join and full outer join. Okay, what is the meaning of left outer join? The left outer join returns the result set table with the match data from the two tables. Okay, दोनों tables का match data plus left table में जो remaining से जो match नहीं हो रहा है that data also printed. Okay, and null from the right tables. Okay, right table में से जो null है, null मतलब क्या? See,
ओके दिस इज अ लेफ्ट टेबल, क्लास इज अ लेफ्ट टेबल, उसमें आईडी है, नेम है, आईडी 1 2 3 4 5, ओके दैट इज दिस इज राइट टेबल, उसमें आईडी है 1 2 3 7 8, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3, ओके 1 2 3 कॉमन है तो 1 2 3 रिटर्न करेगा, प्लस 4 एंड 5 जो है वो रिटर्न करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का टेबल जो है उसमें से अनमैच डेटा, तो 4 एंड 5 आर द अनमैच डेटा फ्रॉम द लेफ्ट साइड टेबल एंड नल डेटा फ्रॉम द राइट साइड टेबल, तो दिस इज राइट साइड टेबल का नल डेटा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन द प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स। ओके, हम लोगों ने क्वेरी अलग अलग कॉम्बिनेशन से भी हम लोगों ने क्वेरी परफॉर्म किया हुआ है। ओके, तो प्लीज उसको प्रैक्टिस करो घर पे। ओके, राइट आउटर जॉइन सेम है, मैच डेटा दोनों टेबल में से प्लस रिमेनिंग डेटा जो है फ्रॉम द राइट साइड टेबल में से दैट विल बी रिटर्न एंड नल फॉर द रिमेनिंग लेफ्ट टेबल कॉलम्स का नल रिटर्न करेगा। ठीक है, सी ओके, कॉमन डेटा बोथ दी टेबल में से राइट साइड का अनमैच डेटा, ओके राइट साइड के टेबल का अनमैच डेटा एंड जो लेफ्ट साइड के टेबल में नल डेटा। ओके, क्योंकि वो कंबाइंड होकर रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है ना, सो दैट ऐसे वो रिटर्न करेगा। ओके, एंड द फुल आउटर जॉइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल आउटर जॉइन, कि दोनों टेबल का कॉमन प्लस दोनों टेबल का रिमेनिंग, दोनों दोनों टेबल्स का रिमेनिंग। ओके, मतलब अनमैच डेटा, दोनों टेबल का मैच डेटा प्लस दोनों टेबल का अनमैच डेटा जो है वो रिटर्न होगा। क्लियर, दैट इज अ फुल आउटर जॉइन। ओके, दैट इज अ फुल आउटर जॉइन। तो क्वेरी क्या होगा फुल आउटर जॉइन का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वन टेबल ने फुल आउटर जॉइन सेकंड टेबल में। ओके, कंडीशन तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैच डेटा प्लस जो अनमैच डेटा है दैट विल बी रिटर्न। ओके, ये आपका हो गया जॉइंस। ओके, जॉइंस क्लियर, yes or no, normalization, joins and aggregate function. Okay, now two topics baki, set operators and views. Okay, joins we have covered, set operators and views. Okay, and algebra करके एक है that I will send to you, अगर मैंने share नहीं किया है तो मैं check कर लूंगी वो classroom में। Okay, and yes, what about the assignment status and practical status, क्या है practical, क्या किया आप लोगों ने? नहीं है ना, ठीक है अरुण, आई विल पोस्ट। ओके, आई विल पोस्ट अरुण, यस रिलेशनल अलजेब्रा में लैपटॉप में है मेरे, तो आई विल असाइन टू गूगल क्लासरूम। ठीक है, मैं कर दूंगी। ओके, यस, असाइनमेंट्स रिमेनिंग स्टूडेंट प्लीज सेंड द असाइनमेंट्स। ओके, असाइनमेंट सेंड करो एंड प्रैक्टिकल्स। ओके, प्रैक्टिकल्स आई हैव टोल्ड यू के which practicals and how to write the practicals, so please complete the practicals, अभी टाइम है तो साइड बाय साइड कंप्लीट करो। ओके, practicals also clear, yes Yes, ma'am. okay।